Okay, so in the last lecture, we learn about properties of exponents and what is meant by exponents and their different formulae we had learned. Now in this session, we are going to study the problem based on exponent. Okay, so wait a minute, I will just share the PDF. Okay, so we had studied different laws of the exponent that some of the laws are x raised to 0 if there, then its value is 1. If exponent is 0, the value of the number is 1. If base is common and different exponents are there, we keep the common base and we add their exponent. If number is in multiplication and common base with different exponents, then we what we do is we subtract the exponents from one another. Okay, now we are going through some solved problems, and after going through the small solved problems, we will solve the practice exercise. Now see, here are some equations are given to us and we have to evaluate it. We will use the squid for better understanding. किया है तूने? हाँ. We will use the squid ka board for better understanding. I had shown you the one or two examples yesterday. Now today we are going to solve the further ones. Okay, so first one I had shown to you. The second one also I think I had shown to you how we are going to solve it. Now the next one is one. This also I think we had taken. Cube root of 6 is also we had taken. Okay, so many of the examples we had solved already, so we'll directly move to the practice exercise. Okay, so in the practice exercise our first problem is evaluate 0.000064 raised to 5 by 6. Now see, what is our problem? We have to evaluate 0.00004 times 064 raised to 5 by 6, I think. Yes, 5 by 6. Now what you have to do here is you have to first solve this thing. So 64, you have to think back. 64, if we see, if we take 0.2, okay, then how many times we have to multiply the 0.2 with 0.2 so we can get 64. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, and 16 to the 32, 32 to the 64. So see, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 and 0.2. How many times I had taken? 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Now why I didn't take 4? See, first always start with the lower number, then we'll move to higher. If 2 is very much we have means अगर हमको बहुत सारे बार 2 को लेना पड़ रहा है, 2 का डिग्री बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम 4 को कंसिडर करेंगे. बट फर्स्ट जो प्राइमरी नंबर्स है, जो सिंपल नंबर है, जो बेसिक 2, 3, 4, सो लोएस्ट नंबर से हमको स्टार्ट करना है. ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट नंबर. सो वी टेक 2. So if it is not 0.2 only 2, then 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, and 32 to the 64. So we can get our answer.
Now how the decimal we had adjusted? So how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So left 6 digit from unit place and then give the decimal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit we had left and we had given the decimal. So yes, it is the simplest or it is the complex form of 0.2 raised to 6. What it means? 0.2 multiplied by 6 times with itself means 0.2 raised to 6. So our equation becomes 0.2 raised to 5 by 6. The law of exponents. What it says, if x raised to m and bracket raised to n, so here we do x raised to m multiplied by n. Now here the same thing is there. Instead of x we have 0.2, instead of m we have 6, and instead of n we have 5 by 6. So our equation become 0.2 raised to 6 multiplied by 5 by 6. Okay, so 6 1 ja 6. So our answer is 0.2 raised to 5. Now if we take 0.25 times, what answer I get? So only consider 5 numbers here. So you will get your answer. So see, 0.2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So our answer is 32. But only 32? No, we have to adjust the decimal. So how many numbers we had taken or how many times the 2 is multiplied? So 1, 2, 3, 4, 5. So left the 5 digit from unit place and then give the decimal. 1, 2, 3, 4, 5 and then point. So 0.0032 is our answer. Now I will explain this in the Hindi also. So see, हमको क्या करना है? हमको ये प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना है. ओके, सो पहले हम लोग सबसे जो छोटा नंबर है, वेदर इट इज इवन और ऑड, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे. तो सबसे छोटा नंबर है 2. ओके, एक तो हम नहीं लेंगे तो 2 हम लोग लेंगे. तो 2 को मल्टीप्लाई करके देखो. अभी मैंने 6 क्यों लिया? क्योंकि मुझे कुछ तो सिंप्लीफाई करना है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ तो कैंसिल होगा, ये अज्यूम करके 2 लिया मैंने. तो अगर मैं 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई गेट द आंसर 64. एंड हियर 0.2 है, तो हमने डेसिमल को वो हिसाब से एडजस्ट करके देखा, तो हाँ हमको मिल रहा है कि अगर 0.2 को हम लोग 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.000064 ये आंसर मिलेगा. सो हमने ये जो 0.0064 है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 0.2 रेज टू 6. नाउ वी यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दिस वन. ये लॉ हमने यूज किया जो बताता है कि अगर एक्सपोनेंट रेज टू, अगर कोई एक्सपोनेंट है अगर कोई नंबर पे, तो जो 2 एक्सपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है. तो हमने क्या किया, 0.2 का एक्सपोनेंट है 6 और पूरे नंबर का एक्सपोनेंट है 5 by 6, तो 6 और 5 by 6 को मल्टीप्लाई किया. सो हमको मिला आंसर 0.2 रेज टू 5. मतलब 0.2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है. अगर ये ऑप्शन है तो इधर ही तुम्हारा एग्जाम्पल का आंसर आ जाता है, बट ये ऑप्शन नहीं है तो तुमको 0.2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर लिखना पड़ेगा. तो 2 अगर हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 32 आंसर मिलता है. 2 फायजा नहीं करना है इधर, हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और उसके हिसाब से हमें डेसिमल को एडजस्ट करना है. तो कितनी बार हमने 0.2 को मल्टीप्लाई किया? 5 टाइम्स. सो यूनिट प्लेस से काउंट करो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स एंड देन लेफ्ट द डेसिमल. ओके, सो आवर आंसर इज 0.3 times 0 and 3 2. Now we are going to check whether the answer is there or not. So yes, answer B है जिसमें लिखा है 0.0032. सो हमारा आंसर है B. समझ में आया? अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? इफ x रेज टू m इज इक्वल टू y रेज टू n इज इक्वल टू z रेज टू q और x y z की वैल्यू हमें दी है 1.
तो हमें फाइंड आउट करना है 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p, उसका वैल्यू क्या होगा। सो पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। देखो हमें क्या दिया है, x रेस टू m इज इक्वल टू y रेस टू n इज इक्वल टू z रेस टू p है, वो q दे दिया उन्होंने, z रेस टू p इज इक्वल टू, ये तीनों इक्वल है और x y z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एंड हमें 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, नाउ सी x रेस टू m इज इक्वल टू y रेस टू n इज इक्वल टू z रेस टू p। तो इसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि x रेस टू m इज इक्वल टू सपोज k। ओके, सो अगर x रेस टू m इज इक्वल टू k है तो y रेस टू n is also equal to k. Okay, z raised to p is also equal to k. इतना समझ में आया? अभी बताती हूँ, 1 मिनट। तो अभी x इज इक्वल टू क्या आएगा, k रेस टू 1/m। ओके, y इज इक्वल टू k रेस टू 1/n एंड z इज इक्वल टू k रेस टू 1/p। Okay, now x y z is equal to 1, so k raised to 1/m into k raised to 1/n into k raised to 1/p is equal to 1। x y z की वैल्यू हमने रिप्लेस की। अभी आप सोचोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, 1/, here you may be confused that why I did like this. X raised to m is equal to k, so why x is equal to k raised to 1/m, I will show you. See, 2 raised to 2 is equal to 4, 2 is x, this 2 I will show 3 here. Okay, 2 to the 4, 4 to the 8, 8. Okay, now this is m and this is k. Okay, now what is this? 2 cube is equal to 8. That means 8's cube root is 2. Last time we had solved na, 2 square or 4 square is equal to 16. So 16, 4 is equal to 16's 1/2, है ना, 1/2 root. That can be shown like this also. In root sign we put 16, so we have to find the square root of 16. Square root of 16 can be written as 16 raised to 1/2. That means don't directly divide 16 by 2, we have to find the square root of 16, means we have to find such a number whose multiplication is 16. 4 4s are 16, like this, not 8 2s are 16. Okay, so this is 1/2 shows the cube root. Likewise
x raised to m is there, so x raised to m is equal to k, means 2 raised to 3 is equal to 8. So 2 is equal to 8 raised to 1 by 3, because we have to find the cube root of 8, so we'll get 2. So same thing here we had done, that x raised to m is equal to k, so x is equal to k raised to 1 upon m. Huh? Now xyz is equal to 1, so we just replace the xyz with k everywhere. So now see, base is common and exponents are different. So remember the law of exponent. If x raised to m multiplied by x raised to n, so what we were doing, x raised to m plus n. So here we have to do k raised to 1 upon m plus 1 upon n plus 1 upon p is equal to 1. Now we had learned one more exponent ka formula that shows x raised to 0 is equal to 1. If any rational number's exponent answer is 1, that means its power is 0. So k raised 1 raised to m plus 1 raised to n plus 1 raised to p is equal to 0. So our answer is 0. Okay, I will explain it again because it is a bit confusing. See, I will again solve it and I will show you. See, what we have, x raised to m is equal to y raised to n is equal to z raised to p. And we know xyz is equal to 1. We have to find the value of 1 upon m plus 1 upon n plus 1 upon p. Okay, is equal to what? We have to find. Now see, I assume x raised to m is equal to k. It means x is equal to k raised to 1 upon m. For example, 2 raised to 3 is equal to 8. That means 2 is equal to 8 raised to 1 by 3. Likewise, x is equal to k raised to 1 upon m. Same, because x is equal to k, then y raised to n is also equal to k, because all the values are same. I had assumed like this, x raised to m is equal to y raised to n is equal to z raised to p is equal to k. सबका वैल्यू k ही है, तो x is equal to k raised to 1 by m, y is equal to k raised to 1 by n and z is equal to k raised to 1 by p. अप टू दिस यू अंडरस्टूड, समझ गया इतना? अभी हमको एक और इक्वेशन पता है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1. इट मीन्स ये जो हमने निकाला है ये सबका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1. k रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय k रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय k रेस टू p इज इक्वल टू 1. अभी बेस कॉमन है तो जो एक्सपोनेंट है उनका हम लोग क्या करेंगे, बेस के दिमाग पे एडिशन करेंगे. तो k रेस टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1. अभी k रेस टू समथिंग इज इक्वल टू 1 कब होगा, अगर k रेस टू 0 रहेगा तो. सो इसका मतलब क्या है, k रेस टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल टू k रेस टू 0. अभी ये k है, ये 0 है, ये 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन p है. इक्वल टू का साइन है, मतलब 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन p का वैल्यू क्या है, 0. खत्म, आंसर आ गया. समझा? अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. वी हैव टू इवैल्यूएट दिस एंड वी हैव टू फाइंड द सो क्या दिया हुआ है हमको, a इज इक्वल टू b रेस टू x, b इज इक्वल टू c रेस टू y एंड c इज इक्वल टू a रेस टू z, और हमको x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ देखो इधर क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग लिख लेंगे क्या दिया हुआ है हमें. अभी हमको एक ए तीनों भी इक्वल नहीं दिए हुए हैं, अलग कनेक्शन दिया हुआ है तीनों में. ओके, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b रेस टू x दिया हुआ है, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c रेस टू y दिया हुआ है, एंड c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a रेस टू z दिया हुआ है.
और हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। कैसे करेंगे हम लोग? अभी ये जो b है उसका वैल्यू क्या है? c रेस टू y। सो मैं क्या लिखूंगी? a इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स इज इक्वल टू, ये b को मैंने रिप्लेस कर दिया, c रेस टू y रेस टू x। ओके, अभी क्या हुआ मेरा इक्वेशन? a इज इक्वल टू सी रेस टू y रेस टू x। अभी c क्या है? a रेस टू z। हाँ, तो ये क्या हो गया? a इज इक्वल टू c क्या है? देखो अभी क्या है c? a रेस टू z। तो a रेस टू z रेस टू y रेस टू x हो गया ये। हाँ, तो ये क्या हुआ? एक्सपोनेंट एक, उसका एक्सपोनेंट, और सब ब्रैकेट ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू a रेस टू एक्स वाई जेड। अभी इक्वल टू का साइन है एंड इधर एक्सपोनेंट का पावर कितना है? 1। सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 and that's what we have to find. Okay, I will explain it again. So what is given to us? A is equal to b raised to x, b is equal to c raised to y and c is equal to a raised to z. Now we have equation a is equal to b raised to x. So b is replaced here by c raised to y and its exponent, that is x. Now our equation become a is equal to c raised to y raised to x. Now we will replace this c with a raised to z. So the equation becomes like this. And remember the exponents law. If x raised to m raised to n raised to z is there, we can do x raised to m n z multiplication. So multiply it. So after multiplying, what it becomes? A is equal to a raised to x y z. Here no power is written but 1 is there. So xyz is equal to 1. Now check whether the 1 is there in the answer or not. Yes, it is there. So our answer is answer B. Okay. Now last example I will take and then we'll stop here, or one more we'll take and then we'll stop. Okay. The next one is Q plus 1 upon P raised to M into Q minus 1 upon P raised to M and divided by the whole thing again. Okay, this will I will take and then we'll stop. Okay, now see what is given to us. Q plus 1 upon P raised to M multiplied by Q minus 1 upon P raised to M divided by P plus 1 upon Q raised to M into P minus 1 upon Q raised to M. Now see, here Anna, you have to remember the laws of exponent. So what is law of exponent? Tell us if a raised to m multiplied by b raised to m. So we can write it as a into b raised to m. Means these two exponent powers are same, base are different. Okay. Take out the common exponent out of the bracket and multiply the base and then do its exponential form. So we can write the upper equation like is equal to q plus 1 upon p multiplied by q minus 1 upon p and bracket raised to m. और नीचे का भी इक्वेशन कैसे हो जाएगा? p plus 1 upon q multiplied by p minus 1 upon q raised to common bracket raised to 1. So p plus 1 upon q into p minus 1 upon q and इसका common bracket and raised to m. Okay. Now see, this is like a plus b
multiplied by a minus b, and its formula is a square minus b square. So this becomes q in place of a, 1 upon p in place of b. So it becomes q square minus 1 upon p square, and डिवीजन में क्या होगा, p square minus 1 upon q square. Okay, and raised to this m and raised to this m. Again the division का formula shows if a raised to m, b raised to m, then we can say a upon b raised to m. So here also we can take the exponent common out. So here we have to make the डिवाइडर कॉमन. ओके, जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन करना है, तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1. इसके नीचे पी स्क्वायर है और इसके नीचे डिवीजन में क्यू स्क्वायर है. ओके, तो और पूरा ब्रैकेट रेज टू m. नाउ इट बिकम्स, अभी ये जो है ऐसा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर. तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. कैसे दिखेगा ये, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1. ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, रेज टू m. सो क्या होगा, ये कॉमन कॉमन कट हो जाएगा, क्या बचा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर रेज टू m. Now see, exponent 2 is common here, we can take it out. So it becomes q upon p raised to 2m. 2 and m we can multiply because a raised to m raised to n is equal to a raised to mn. So 2m and q upon p. So this is our answer. Now I will again explain it and then we'll move to the, or we'll take in the next class rest of the things. See, we had given q plus 1 upon p raised to m, q minus 1 upon p raised to m. If exponents are common and base are different, we can take out the common exponent outside the bracket, that we had done already. See here. Okay, now it is in the form a plus b multiplied by a minus b. If such a condition is there, a plus b multiplied by a minus b, we say it is equal to a square minus b square. So our a is q and our b is 1 upon p. So our equation becomes q square minus 1 upon p square and p square minus 1 upon q square. Okay, and upon p. So here we have to make the denominator common. Q square's denominator is 1, but minus 1 upon p square is there. So we multiply here in the numerator with p square. So it becomes p square q square minus 1 divided by this p square. Okay, and p square q square minus 1 divided by this q square. This one. Okay, now it is like one rational number a upon b is divided by another rational number c upon d. In this case what we do, we multiply the first number with the reciprocal of the second number. Okay, so here the same thing is there, this is one rational number, this is one rational number. So we multiply the numerator with the reciprocal of denominator. क्यू स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और ये जो न्यूमरेटर में था इसके डिनोमिनेटर के नीचे वाले पोर्शन के वो डिनोमिनेटर में चला गया. हाँ,
So common p square q square minus 1, p square q square minus 1 will get cancelled. So what is remaining? Only q square upon p square raised to m. So 2 can be taken out common. So it become q upon p raised to 2m. समझ में आया? थोड़ा थोड़ा. Can I explain it again? 2 रैशनल नंबर है. दो रैशनल नंबर है a अपॉन b मल्टी डिवाइडेड बाय, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, c अपॉन d. अगर ऐसी कंडीशन रहती है कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला रैशनल नंबर है a अपॉन b, इसको हमको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका पोजीशन घुमा देना है. ओके, तो सेम थिंग हमने इधर किया कि ये एक रैशनल नंबर था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये दूसरा रैशनल नंबर था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर. सो हमने उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो कॉमन न्यूमरेटर और इधर डिनोमिनेटर थे वो कैंसिल हो गए और सिर्फ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बचा, और उसका एक्सपोनेंट पावर तो था ही कॉमन m, तो वो हमने लिख दिया. तो हमारा आंसर है q अपॉन p रेज टू 2m. Where is our answer? Answer D. Understood? Here simply we had used the formula a plus b multiplied by a minus b is equal to a square minus b square. A is q, b is 1 upon p whole. So a plus b multiplied by a minus b. So a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. So इधर हम लोग रुकते हैं और जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. आई होप तुमको ये चारों सम समझ में आए. ओके, बाय.